subscribed yet, do subscribe, and to never miss a video from my channel, click on the bell button. Like 150 rupees for these tiny 3 little golden fried prawns. 150 rupees. Oh, hi guys, welcome back to my channel and I am Gunjan. You all must be wondering what am I blabbering. Actually, I am thinking that these tiny 3 golden fried prawns costed me 150 rupees. Like seriously? Yesterday I visited a restaurant and I ordered golden fried prawns. They served me 6 pieces and charged me 300 rupees. Can you all just imagine? Then I thought, why not prepare these prawns in my kitchen and save 300 rupees? So I started preparing these prawns, and let me tell you, I spent only 100 rupees and prepared 10 such golden fried prawns. So let's not waste time and head to my kitchen and prepare these golden fried prawns. गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स के लिए पहले यहाँ मैंने लिया है प्रॉन्स जो कि प्रॉपरली वॉश्ड और डीवेन्ड हैं। प्रॉन्स के वेन को इस तरह से निकाल दें। प्रॉन्स को डीवेन करने से ये फ्राई करने पे कर्ल नहीं होते। फिर प्रॉन्स पे इस तरह से कट मार्क्स डाल दें। अब हम बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए एक बाउल में एग व्हाइट ले लें। फिर डालें स्वाद अनुसार नमक। फिर डालें कॉर्नफ्लोर और मैदा। कॉर्नफ्लोर और मैदा की रेशियो 1:2 में होनी चाहिए। यहाँ अगर कॉर्नफ्लोर आप 1 कप लें तो मैदा 2 कप लें। ऑयल ऐड करें। अच्छे से मिक्स करें। बैटर की कंसिस्टेंसी के लिए पानी ऐड करें। अब इसमें एक ट्विस्ट इंग्रेडिएंट डालें जो कि है schezwan सॉस। schezwan सॉस इस रेसिपी की टेस्ट को बहुत एनहांस करता है। बैटर में बिल्कुल भी लम्प्स ना रखें। अब इस बैटर को मिनिमम 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट कर लें। 15 मिनट बाद तेल गरम करें। प्रॉन्स को एक एक बैटर में डिप करें। और गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करें। फ्लेम को मीडियम ही रखें। इसे बिल्कुल ही गरम सर्व करें वरना प्रॉन्स की क्रिस्पीनेस कम हो जाएगी। So guys, these prawns are ready and I am literally hungry to have this. So let me taste. Yes, it's yum.
It's accurately the taste that I had in the restaurant and what I was looking for. But the only thing that you need to do is have these prawns immediately once you fry it. Because if you keep them and then you have it, you will lose the crispiness of the prawn. So have it immediately when you fry it. So run away to your kitchen, prepare these prawns and let me know how it came out for you all. And before you go, please click on the like button, share it with your friends, family and everybody. And if you haven't subscribed to my channel yet,